Hello learners, today we are going to study science chapter number 2 microorganisms friend and foe. In the part 1 we have already seen what are microorganisms and their types also we have seen and where they exist or their habitat. In this video we are going to see how they can be called friends or foe. Foe means enemy, I have already explained. Let us understand why they are called friends. we call them friends because they are very useful. They are useful in our houses. They are useful in many factories also. They are also used in producing antibiotics, vaccines, and there are many various other uses of microorganisms. Right now we will learn one by one in detail. Okay, first we are going to learn microbes in household products. This is very familiar topic to all of us, as we have seen or we enjoy curd every day in our diet, and you know curd contains a bacteria called lactobacillus. Okay, milk is converted into curd by a bacteria called lactobacillus. Okay, आप लोगों ने अपनी मम्मी को देखा होगा, दूध होता है, ल्यूक वार्म दूध होता है, उसमें मम्मी हाफ टी स्पून जितना कर्ड डालती है एंड दैट मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. Similarly, we have seen use of yeast in making bread, or we can say cake sometimes also, and pizza bread also. And you have seen, or all of us love to eat South Indian food like idli, dosa. In this also microorganism plays a very important or vital role. You have seen your mother preparing idli. If she want to prepare idli, she makes a batter, and she makes batter before 4 to 5 hours. Why she makes? Because the microorganism develops in that and makes the dough very fluffy, and that's why idli becomes very soft. Similarly, we all love to eat cheese also, and this cheese is also made using bacteria. So now we know why it is called friend, because it is very useful in our household products. Now we are going to see second point, that is microbes commercial use, how they are used in industries. Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for large scale production of alcohol, wine and acetic acid. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Yeast is also used for commercial production of alcohol and wine. The sugar for making alcohol comes from grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. Fermentation is done by the action of yeast on the sugar in a liquid medium. All of us know very well that Louis Pasteur discovered fermentation in the year 1857. In simple terms, we can say it is a biochemical process. Why it is biochemical process? Because in this process yeast is used. Yeast is a microbes, so it is called as biochemical process. Next we are going to study, or we are going to see the microorganism used in medicines. All of us know that whenever we fall sick, we visit doctor, and doctor prescribe us antibiotics. Okay, so what does antibiotic does? What is the function of antibiotic? Antibiotic क्या करता है? Antibiotic stops or kills the growth of disease causing microorganisms. So ऐसी मेडिसिन्स जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको मार देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स हमें हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लेने से बहुत सारे जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो भी किल हो सकते हैं.
These antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Example of these antibiotics are penicillin, streptomycin are some of the common example. For this purpose or for preparing antibiotics, microorganisms are grown and are used for curing a variety of diseases. Antibiotics are not only used for curing human beings, but they are also used for animals and plants. Okay, now fourth we are going to study the use of microorganism in preparation of vaccines. First of all, let us make it clear what is the difference between medicine and vaccine. मेडिसिन हम कब लेते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो मेडिसिन होती है. लेकिन वैक्सीन्स होती है जो हम बीमारी के पहले लेते हैं ताकि वो बीमारी हमें ना आए या उस बीमारी से हम बचे रहें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग सभी ने देखा होगा, बहुत सारे ऐड देखे होंगे पोलियो कैंप के. स्पेशली पोलियो पूरी तरह ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया है और आपको पता है उसकी ड्रॉप्स बच्चों को पहले से ही दी जाती है, उसकी वैक्सीनेशन बचपन में ही बच्चों को कर दी जाती है, इसलिए पोलियो होता नहीं है. ठीक है. वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेस. इसमें क्या किया जाता है? वैक्सीन का मतलब क्या होता है? डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स, जो मरे हुए या एकदम कमज़ोर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमारी हेल्दी बॉडी उनको डिटेक्ट करती है, उनसे फाइट करती है और उनको किल कर देती है. जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में बाहर से बैक्टीरियाज आए हैं, और हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है एंटीबायोटिक्स. और ये जो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है वो हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं. एंड जब भी वो बैक्टीरियाज या जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में वंस अगेन एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड, या हमारी बॉडी हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए. आई होप आई एम वेरी क्लियर. अब हम देखते हैं कौन कौन सी डिसीज़ेज़ होती है या कौन कौन से डिसीज़ेज़ के वैक्सीन्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑलरेडी बोला है किसका वैक्सीन? पोलियो इज़ अ वेरी कॉमन जिसका वैक्सीनेशन हमें बचपन में ही लगा देता है. एंड यू कैन सी द चार्ट ऑन योर स्क्रीन. ओके. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers. Example, rhizobium. आप सभी को पता है नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में या एयर में अबेंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन ये नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में है उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में. ठीक है. ये कंपाउंड रूट्स, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे कैन मेक यूज़ ऑफ नाइट्रोजन. ओके. सो इन शॉर्ट वी कैन से some microorganisms increase the fertility of the soil. Next, fifth importance, or why we call them microbes friends, they are also natural decomposers. अब decomposers का मतलब क्या होता है? Decompose करना. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? जो भी हार्मफुल एंड स्मेली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस पे. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन किया. यदि वो डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो सब जगह डेड एंड डिकेइंग थिंग्स हमें मिलेगी और हमारे रहने के लिए भी शायद जगह बहुत कम हो जाएगी. तो इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स या एंड दे क्लीन द एनवायरनमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी why they are called foe or enemy. Microorganisms are not always helpful
At times they are very harmful. They cause many diseases in human beings, plants and animals also. How they spread diseases in human beings, animals and plants, we will see. They can spread diseases through air we breathe, water we drink, food we eat, and the diseases can also transmitted through the infected person when a person comes in direct contact with the infected person, or through some insects or animals it can also spread. Let us see how they spread diseases in humans. When a person suffering from common cold or flu sneezes, coughs or spits, find droplets of moisture carrying viruses spread in the air. These viruses may enter a healthy person while breathing. And the example of such disease is tuberculosis. Through direct contact with infected person, chickenpox and ringworms can spread in this way. Through food we eat or water we drink, if we eat contaminated या खराब खाना जब हम खाते हैं तो हमें diseases हो सकती है कॉलरा एंड टाइफाइड. थ्रू वेक्टर्स और कैरियर्स का मतलब होता है, आपको पता है कुछ पैथोजेंस को कैरी करते हैं. पैथोजेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है किसको कहते हैं. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो कुछ कैरियर्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई या फिर कुछ मॉस्किटोज हैं जो कैरी करते हैं किसको, पैथोजेंस को या डिसीजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम बोलते हैं कैरियर्स. ठीक है, तो कुछ डिसीजेस इन कैरियर के साथ या कैरियर के द्वारा भी कैरी की जाती है और ऐसी डिसीजेस का नाम है दैट इज मलेरिया. ऑल ऑफ यू नो मलेरिया इज बाई प्लास्मोडियम. हम अभी तक सब यही सोचते हैं कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिसिस, लेकिन वो एक कैरियर है. फीमेल एनाफिलिसिस एक कैरियर है, वो कैरी करती है प्लास्मोडियम को और जिससे हमें डिसीज मिलती है दैट इज मलेरिया. ओके, अनदर एग्जांपल वी कैन से एडिस मॉस्किटो, ओके, विच कॉजेज disease dengue. Diseases can be broadly classified into two categories: communicable diseases and non-communicable diseases. Communicable diseases क्या होती है? Communicable diseases वो diseases होती है जो spread होती है from one person to another through air, water, food or physical contact और by some carriers. ठीक है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती है? जो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती. इन सिंपल टर्म्स दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम उस डिसीज का, जैसे कि कैंसर है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर हार्ट, ये सब क्या नहीं होती है, कम्युनिकेबल नहीं होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाती है. तो हमें स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीजेस का विशेष ध्यान रखना है ताकि वो स्प्रेड ना हो. ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस. हमेशा जब भी हमें छींक आती है या कॉफ करते हैं तो हमें हमेशा अपने नोज़ को कवर करना चाहिए और माउथ को कवर करना चाहिए ताकि जो बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो एनवायरनमेंट में न आए और दूसरों को दे. Keep your food covered and avoid consuming uncovered food items. क्यों नहीं हमें कवर करना है? क्योंकि आपको पता है अनकवर्ड फूड होंगे तो फ्लाई या मस्किटोज, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर आएंगे और फिर वो हमारे फूड पे बैठेंगे और हमारा फूड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा. ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर. हमेशा हमें प्योर वाटर पीना चाहिए. प्योर इन द सेंस क्लीन वाटर. हम वाटर को क्लीन करने के बहुत सारे प्रोसेस है. बॉईल कर सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं प्यूरीफायर्स. यूज़ मस्किटो नेट्स और एंड मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स टू सेल्फ फ्रॉम मस्किटो बाइट. और फोर्थ हो गया. फिफ्थ अब हम पढ़ेंगे, हमेशा प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए हर चीज़ की, स्पेशली फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन देना चाहिए. एंड लास्ट, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर. अभी तक हमने समझा था या सबने पढ़ा हुआ है कि स्टैग्नेंट वाटर इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर ब्रीडिंग माइक्रो
microorganism. So we should not let water collect anywhere for a longer time. You will see on your screen common human diseases, their causes and mode of transmissions and preventive measures. Second, now we are going to study disease causing microorganisms in animals. Some microorganisms not only cause disease in humans but also in other animals. Example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Some of the examples you can see on your screen, that is anthrax, foot and mouth disease, swine flu, bird flu. Third, now we are going to causing microorganism in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, etc. These diseases reduce the yield of crops. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. Some of the examples you can see on your screen. Disease in plant can be citrus canker, rust of wheat, yellow vein, mosaic of bindi, etc. And why they are called enemies? For that, one more reason, फूड पॉइजनिंग. कई बार हम लोग ने सुना है कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग के कारण. क्या होता है फूड पॉइजनिंग? जब भी फूड कभी अनकवर्ड होता है या लॉन्ग समय के लिए रह जाता है तो उसके अंदर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड में कुछ टॉक्सिक्स या हम कह सकते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, जिससे हमारा फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है और वो फूड एडिबल नहीं होता है. और उस फूड को यदि बाय चांस कोई खा लेता है तो वो बीमार हो जाता है और वो बीमारी इतनी खतरनाक भी हो सकती है जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है. सो वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड एंड फूड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इज क्या क्या हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के समय? वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक,